Welcome to session number 12, last session of pair of linear equations in two variables of class 10th mathematics. Today we are going to complete the chapter. So whatever the questions left over in exercise 3.7 that we are going to complete. So let us start with the question number 6, that is graph question. I am reading the question. Draw the graphs of the equations 5x minus y is equals to 5. So first equation is 5x minus y is equals to 5 and 3x minus y is equals to 3. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis. Okay. So मैंने कहा था कि जब भी y नेगेटिव होता है तो उसको शिफ्ट करना है. ठीक है. Our target is to make the coefficient of y positive. तो इसको शिफ्ट करना है. यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 5 को इधर शिफ्ट कर दो. सो और पलट के लिख दो. सो y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 5. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 3 वैल्यूज. राइट. सो पहले हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा. इफ यू सब्स्टिट्यूट 1 it will become 0. If we substitute 2, it will become 5 into 2, 10 minus 5 is 5. So we got 3 coordinates. Now the next one is 3x minus y is equals to 3. So इसमें भी हम लोग minus 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो it will become plus 5 और 3 को इधर शिफ्ट करेंगे और then उसको पलट के लिखेंगे. y is equals to 3x minus 3. So here also we'll substitute first 0. So 0 minus 3 is minus 3. Then we'll substitute 1. 3 minus 3 is 0. Then we'll substitute 2. Okay. So 3 into 2 is 6 minus 3 is 3. So we got 3 coordinates. सबसे पहले हम लोग first line को draw कर रहे हैं. So x coordinate is 0. That means it belongs to y axis. Y axis पे कहाँ पर होगा? minus 5. So this is first point. And 1 0. Y coordinate is 0. That means it belongs to x axis. So where it is? At 1. And the second one is 2 5. So 2 5 it will be come over here. तो अभी line draw कर लेते हैं. So you have to use your own scale. यहाँ तो मैं free hand से draw कर रहा हूँ. Right? So this is 2 5 and this is 1 0. And this is 0 minus 5. So we got and यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं 5x minus y is equals to 5. Now the next one is 0 minus 3. Again it belongs to y axis. तो कहाँ पर होगा? एक मिनट यहाँ थोड़ा सा तो यहाँ पर होगा. And second is 1 is 0 already है यहाँ पर. And then is 2 3. 2 3 will get somewhere here. Okay, तो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. So this is 2 3 and this is 0 minus 3 और मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ. थोड़ा से सीधा कर लेते लाइन को. Right. So this is 3x minus y is equals to 3. If you draw on graph paper that would be better. क्योंकि यहाँ पे तो मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ. ग्राफ में आप ड्रॉ करेंगे तो you have to use scale also. So now our graph is over. Now what is the question is that the next part, determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines. ये जो लाइन है इसके साथ में y एक्सिस में ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. ओके. सो आई एम टेकिंग इट एज ए, दिस एज b and this as c. Okay. So vertices, the coordinates, hence the coordinates of the vertices of triangle formed by
these lines with y axis are सबसे पहले A 1 0, next B 0 minus 3, and the last one is C 0 minus 5. Okay, so this is the answer. Now the next question, we have 5 bits, so इसको मिटा देते हैं. उसके बाद एक ही क्वेश्चन बचेगा, that we will complete, then we will wind up the section. Okay, now we'll start with the first question. Solve the following pair of linear equation. The first bit, seventh question, first bit, px plus qy is equals to p minus q. This is the first equation, and the second equation is qx minus py is equals to p plus q. Now we will use elimination method. ठीक है, elimination method हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को सेव करेंगे. So यहाँ पे you can make the coefficient of x same, y also same, but I will prefer y क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है. So I told you while doing elimination method also, अगर साइन अलग रहेगा तो what we have to do, we have to add. तो एडिशन जो है सब्ट्रैक्शन से इजी है. So that is why q को क्या करेंगे हम लोग, p से इंटू करेंगे, और p को क्या करेंगे हम लोग, q से इंटू करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे. सो विल राइट मल्टीप्लाई 1 by p and 2 by q, then adding we get. So इसको हम p से इंटू कर रहे हैं. सो p square x plus pqy is equals to p square minus pq. Right? The second one, this will become q square, q से इंटू कर रहे हैं, minus pq, and this will become pq, and this will become q square. Now addition, no need to change the sign. ये cancel हो गया और ये वाला cancel हो गया. So what we are going to get, p square, यहाँ पे क्या x common ले सकते हैं, we can take x common. So we are going to take x common. So यहाँ पर भी p square plus q square बचा. So ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, we'll get x is equals to 1. Okay, now substituting x is equals to 1 in first equation. Substituting x is equals to 1 in equation 1 we get, or you can write directly, implies you can directly substitute. So p plus qy is equals to p minus q, right? And we'll shift p to that side. माइनस पी हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया और माइनस क्यू बचा. सो माइनस क्यू बाई क्यू विल बी माइनस 1. हेंस द सॉल्यूशन इज x is equals to 1 and y is equals to minus 1. So we have completed the first bit. Now we'll start the second bit. Okay, second bit is ax plus by is equals to c, and bx plus ay is equals to 1 plus c. Okay, 1 plus c. क्वेश्चन सही है, हाँ सही है, राइट. नाउ सी, दोनों का साइन सेम है और हम लोग को या तो x का कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं या y का. अभी भी मैं y के लिए ले रहा हूँ क्योंकि एक कंटिन्यूस हम लोग वही काम कर रहे हैं. ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग y के कोएफिशिएंट को ही सेम किए. यू कैन सेट द कोएफिशिएंट फॉर x आल्सो, देयर इज नो इशू. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो इसको a से इंटू करेंगे और इसको b से इंटू करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे.
So multiplying 1 by A and 2 by B, then subtracting we get. Right? So इसको हम लोग A से इंटू कर रहे हैं. So A square x plus ABY is equals to AC. Now this we are going to multiply with B. So this will become B square x plus ABY is equals to B plus BC divided by. Now subtraction. Subtraction means the second equation sign will be changed. So this will be cancelled. What we are going to get? A square minus B square into x. यहाँ पे x common ले लेंगे. And here we are getting AC minus B minus BC. Okay. So x will be equals to AC minus B minus BC upon A square minus B square. So this is the value of x. आप चाहो तो इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं. Otherwise, what you can take? You can take a common from these two terms, or you can leave like that only. No issue. So x निकल गया. Now we are going to find y. So y के लिए क्या करेंगे? Now see, substituting x in any one equation, now solving is difficult. इस क्वेश्चन में x का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना थोड़ा सा दिक्कत है. इसलिए my suggestion is that again you go process for making coefficient of x same. हम लोग क्या करेंगे? वापस क्या करेंगे? x का कोएफिशिएंट सेम करके सब्ट्रैक्ट करेंगे. थोड़ा जल्दी आ जाएगा. अगर x का वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे किसी भी इक्वेशन में, सो थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा. तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? इसको b से इंटू कर रहा हूँ और इसको a से इंटू कर रहा हूँ. राइट? सो मल्टीप्लाइंग, उसके बाद सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लाइंग 1 by b and 2 by a, then subtracting we get, see, इसको b से इंटू कर रहे हैं तो abx plus b square y is equals to bc. Now we are multiplying with a. abx plus a square y is equals to a plus ac. Now subtraction, minus 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 minus. So ये दोनों कैंसिल हो गया. इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं b square minus a square. So bc minus a minus ac. So finally we are getting y is equals to bc minus a minus ac upon b square minus a square. So this is the final answer. Okay. So we got the answer also. So now we are going to solve another question, that is question number 3. 3 के लिए place है कर लेंगे. Third, यहाँ पे conclusion you have to write by yourself. Hence the solution of equations are x is equals to a, y is equals to a. Now see, back side में यहाँ पर a square minus b square भी हो सकता है. So अगर a square minus b square होगा तो ऊपर सभी का साइन चेंज हो जाएगा. What we will get? a plus ac minus bc upon a square minus b square. So you can write this answer also, no issue. So now I am writing the third equation, x by a minus y by b is equals to 0. So now we have to simplify this one. How will you simplify? By taking LCM. फिर ab into 0 कितना हो जाएगा? 0. So we got first equation bx minus ay is equals to 0, and the second equation is ax plus by is equals to a square plus b square. This is the second equation. Now see, what I will do, I will make the coefficient of y same. तो इसको b से इंटू करेंगे और इसको a से इंटू करेंगे. Then the signs are different, so what we will do, we will add. Right? So I am going to write multiplying 1 by b and 2 by a, then adding we get. ठीक है. Now we are going to multiply. So इसको b से इंटू कर रहे हैं. b square x
माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. इसको ए से इंटू कर रहा है, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ यू हैव इन माइंड दैट कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख गया कि इन दोनों को ऐड करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, राइट. सो व्हाट वी विल डू नाउ, नेक्स्ट स्टेप वी विल ऐड. तो ये दोनों कैंसिल हो गया, इसमें बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा. नाउ दिस टू विल बी कैंसल एंड विल गेट x is equals to a, right. Now we will substitute in first equation. Substituting x is equals to a in equation 1, we get first equation का मतलब ये वाला. So ab minus ay is equals to 0. So ay is equals to ab, a cancel हो गया, and we'll get y is equals to b. So we get the equation solution. Hence the solution is x is equals to a and y is equals to b. So we completed the third bit also. Now let us move towards the fourth bit. Fourth bit. Fourth bit, then fifth bit, and then the last question. So we are approaching towards the end. Right now, the fourth bit. Fourth bit, I'm writing the question. A minus b into x plus a plus b into y is equals to a square minus 2ab minus b square. Second equation, this is first equation, okay. Second equation, a plus b into x plus y is equals to a square plus b square. Now this is not the second equation. हम लोग क्या करेंगे? See, this is given in separate product के फॉर्म में दिया हुआ. So we have to simplify this. क्या करेंगे? a plus b into x first term, then a plus b into y second term. So what we can write? A plus b into x plus a plus b into y. Now we'll take this as second equation. Now check any coefficients are same or not. Yes, the coefficient of y is same and the sign is also same. So what we have to do? Subtraction. So subtracting 1 and 2 we get. Subtracting 1 and 2 we get. So subtraction, इसको पहले लिख लेते हैं. A square plus b square. I'm writing this second one. A square minus 2ab minus b square. ठीक है. ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी काफी बार आ चुका है. And this is very important question. और क्वेश्चन देख के कई बच्चे डर जाते हैं, बट दिस इज वेरी इजी, क्योंकि इसको बस इंटू करना है. इंटू करने से एक कोएफिशिएंट सेम हो गया. नाउ यू हैव टू सबट्रैक्ट. सी, सबट्रैक्शन में साइन चेंज करना होगा. माइनस 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 प्लस प्लस. सो दिस होल विल बी कैंसिल. हियर आल्सो दिस a minus a will be cancelled. Here a square is cancelled. बाकी कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है. सो यहाँ पे मिलेगा 2bx. What here we will get 2ab plus 2b square. ठीक है. यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं. What we can take common from here? 2b. We can take 2b common. So यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे b बचेगा. So 2b will be cancelled and we get x is equals to a plus b. So x का वैल्यू मिल गया. Now we are going to substitute x in any one equation. Either second equation or first equation. चलो मैं second में डाल दे रहा हूँ. Substituting x in equation 2 we get यहाँ पे तो a plus b into a plus b plus a plus b into y is equals to a square plus b square.
What is a plus b into a plus b? A plus b whole square. So we get a square plus b square plus 2ab. Now see, we'll shift all this to that side. So that will become minus. पूरा minus हो जाएगा. So a square plus b square minus a square minus b square minus 2ab. Now see, these two will be going to get cancelled. ये भी दोनों cancel हो गया. And we'll get y is equals to 2ab upon a plus b with minus sign. So hence the solution is x is equals to a plus b and y is equals to minus 2ab upon a plus b. Clear? Okay. Now we are going to complete the last bit of this question. That is 152 x minus 378 y is equals to minus 74. Okay. Next, minus 378x plus 152y is equals to minus 604. Now see carefully. इसमें इस क्वेश्चन में कई बच्चे क्या करते हैं, कोएफिशिएंट सेम करने की कोशिश करते हैं. इसको 152 से इंटू करते हैं, इसको 378 से इंटू करते हैं. सो ऐसा नहीं करना है. कभी भी जो बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, when you will get the large numbers, there is a one trick. So what trick you have? You just check on adding these two, you are getting the same number. ये दोनों को ऐड करने से सेम नंबर मिल रहा है, right? Similarly, if you subtract also, you will get the same number. So हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको ऐड करेंगे, उसके बाद subtract करेंगे. So adding 1 and 2 we get. See carefully. मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे ऐड करने के लिए. No change in sign. So यहाँ पे ये बड़ा है और यहाँ पे ये बड़ा है. So इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा. So what is the difference in this 378 minus 152? कितना मिलेगा? और यहाँ पे दोनों ऐड हो रहा है minus 678. What we are going to get here? 226 minus 226y. ठीक है? ओके. इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? Right? Now see, minus minus cancel and these two will be also cancelled. So what we are going to get? 3. This is our third equation. Third equation. अब उन दोनों को subtract करेंगे. Again, subtracting 1 and 2 we get. Right? 152x minus 378y is equals to minus 74 minus 378x plus 152y is equals to minus 604. Subtract कर रहे हैं, so sign change होगा, plus minus plus. Now we have to add this two. So यहाँ पे कितना मिल रहा है? 530x minus 530y is equals to 530. So you divide all by 530. So we'll get the fourth equation. ठीक है? So मैंने कहा, what I told you that जब भी बड़ा बड़ा नंबर दिखेगा, whenever you will see the large number, just on adding these two and subtracting these two, you check whether you are getting the same number or not. उसके बाद ये प्रोसेस करना. Now solving these two equation will become very easy. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट सेम है, so मैं यहाँ पे कर रहा हूँ adding 3 and 4 we get. What is 3? X plus y is equals to 3. What is 4 equation? Now we'll get 2x is equals to 4 or x is equals to 2. Now we'll substitute here. 2 plus y is equals to 3 and y is equals to 3 minus 2 is equals to 1. So we got the solution. Hence
the solution is x is equals to 2 and y is equals to 1. See how easily we solve these two equations. So कुछ बच्चे क्या करते हैं, even some very intelligent student, they also used to do, if they don't know the trick, if they know the trick they can do easily like that. So they used to make the coefficient same by multiplying with 152, 378, multiply करते रहते हैं, फिर add करेंगे, फिर divide करेंगे. So they are wasting lot of time. So this is the best trick. Whenever the large number will be there, you have to see whether the sum and difference are same or not. Okay. So now we are moving towards the last question, that is question number 8. So last year you have studied the properties of cyclic quadrilateral. One of the properties is that the sum of opposite interior angles, the sum of the opposite interior angles is equals to 180 degrees. So that we are going to do right now. ABCD is a cyclic quadrilateral. Find the angles of a cyclic quadrilateral. So मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ जो कुछ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. Right. So A, B, C, D. This angle is given 3y minus 5, and this angle is given minus 4x, and this angle is given as 4y plus 20, and the last angle this is given minus 7x plus 5. Right. Now here we know that what we have to write. We know that the sum of the interior opposite angles, interior opposite angles of cyclic quadrilateral, either pair, is 180 degree. Right? So therefore angle A plus angle C is equals to 180 degree. This two. So ये दोनों को मैं ले रहा हूँ minus 4x plus 4y plus 20 is equals to 180 degree. Okay. So minus 4x plus 4y will shift 20 to that side. So minus 20 हो जाएगा. And this is equals to 160. So सबको 4 से divide कर देते हैं. So minus x plus y is equals to 40. So this is our first equation. And the second one is angle B plus angle D is equals to 180 degree. Right? So angle B plus angle D. So minus 3x or 7x plus 5 plus 3y minus 5 is equals to 180 degree. So here this 5 will be cancelled, and what we are going to get, this is second equation. Now see both the equations. यहाँ पे minus x है, यहाँ पे minus 7x है. Here plus 1 plus 3. So what we will do, the sign are same. The sign are same, and I am going to multiply with 3. इस इक्वेशन को 3 से इंटू करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. So multiplying 1 by 3, then subtracting with 2 we get. Okay, so इसी को भी पहले लिख लो. I'm writing this one first. Minus 3x plus 3y is equals to 120 degree. Now the second one, minus 7x plus 3y is equals to 180 degree. Subtraction, sign change, plus minus minus. This two will be cancelled. 4x is equals to minus 60 degree. So we'll get x is equals to minus 60 upon 4. So 15 आ गया x का वैल्यू minus 15. अब सोचेंगे कि एंगल कभी माइनस तो होता नहीं है, but if you substitute here, it will become plus. The angle will become plus if you substitute here. So this is correct. Now substituting
x यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी माइनस एक्स है, सो इट विल बिकम प्लस. इन इक्वेशन 1 we get so 15 plus y is equals to 40. So y is equals to 40 minus 15, that is 25. So we got the value of x and y. Now angles we are going to find. Hence angle A is equals to, what is A? 4y plus 20. So 4 into 25, 100 plus 20, 120. Now angle B, 3y minus 5. So 3 into 25, 75 minus 5 is 70. Okay, now angle C, minus 4x. So minus 4 into minus 15 is 60. Now the last one, angle D, minus 7x plus 5. Right. So minus 7 into minus 15. Minus 7 into minus 15 will become 105. Is 110. So we got all the values. Now we have completed chapter number 3 with all questions. Okay. So now I want to announce today that since last 2 months I have not taken any break. So continuously preparing and uploading all the video lessons. So now I wish to take 1 week break so that you also will get some sufficient time to complete all the missed portions. Okay? So I request to all of you that please revise all the 4 chapters what we completed, chapter number 1 to 4 thoroughly, right? So that we can start with chapter number 5 next week. Okay, so that's all for today's session. Thank you very much.